Lal, B. Govindarajan, and Mark Wells to come up and please do join us.
Bullet Black Gold. Congratulations. 9 decades tradition, 9 decades of resilient service. Thank you. Check. You heard about this bullet. It has to be told in country. Yeah. Thank you. So it's a long story. That's why we wanted to actually recount the whole story and the journey, and we spent enough time in the morning. The Bullet Trust in India started at a manufacturing plant at Tiruvachiyur, Old Madras. From there, now it is here, which we are presenting the Bullet, which is all new, which you are taking it to the next generation. You know, at Tiruvachiyur, which is our first manufacturing facility, when we were doing the motorcycle, the Bullet, we were actually literally doing everything in an handcrafted way. You can see the lovely looking teardrop fuel tank. This was actually done with 9 different pieces, which were literally pressed, malleted, braced, buffed, and that's how it was hand built at that place. From there, over a period of time, we evolved into a 3-piece construction for delivering a better quality to the consumers, but we always maintained the character, the charm, the look and feel of the teardrop, lovely looking fuel tank. Over the years, Bullet has a very long history, as I mentioned. I joined in this company almost 3 decades back. At that point of time, the Bullet engine, which was manufactured on an absolutely manual line, which used to have almost about 60-70% as a rework. The first automation, which as a team, which we did for improving the quality. Today, all the Bullet, their entire engine is being manufactured from an automated line, which has about 550 assembly improvements and the mistake proofings to deliver the best-in-class quality to the entire motorcycling world across the globe. Over the years, when the Bullet has ridden, along with the Royal Enfield also grew very well in terms of its competencies, quality, capacity everywhere. This, which started off the Bullet manufacturing from the Red Edge, then on into the Tiruvachiyur, the old Madras, and now into the Vallam Badagal, which is the state-of-the-art manufacturing facility, along with another one facility at Oragadam. But over the years, though we have improved, what we retain as a character, as a DNA, is something is unchanged, is something like the pinstripe. Even today, we make it by our own hand, by putting our heart and soul into it. That's what is the character we always retained it. Just to show you our manufacturing journey and how we are making the motorcycles, which are the best in class quality over the period of time. We will have a short film, which will be showed to you, which is made in Madras. Anur, can we have the film, please? The term or the terminology which is used in the rest of the world is DFM, which is designed for manufacture or designed for manufacturability, which is the design which is created helps manufacturing. The way Royal Enfield looks at it is the other way around, which is manufacture what is designed. Royal Enfield is the one organization, one company which maintains that human touch in manufacturing the motorcycles, because that gives a different feel, that passion, what the people will have a passion in building the bikes and that human touch. So the fuel tank getting buffed by a robotic arm, so that the tank under the chrome plating gets a full sheen. That tank is getting painted by robots. Once the painting done, a human, an artist, takes it and put a pinstripe in. Robo buffed, robo painted, and a human or an artist create a pinstripe over it.
what else is the best way to marry a heritage value and the modern technology? The focus at Royal Enfield is not on motorcycle, then it's a product. It's always on motorcycling. It means it's a connection between the person and the product. It's not about sitting in meeting rooms and boardrooms and discussing what is the next thing to do. It's to kind of connect which a lot of the team members have with the person who's actually putting together a fuel tank or a frame or an engine. Our engine is the cleanest engine, which was certified by independent YouTuber. And when he is compared with that engine cleanliness, Royal Enfield engine cleanliness is much better than the other motorcycles. It is a surprise for him also. We gone for air-conditioned place where the engines are being assembled. Thereby, there is no external dust coming and settling onto the product. So thereby, we can proudly claim that we are able to give a cleanest oil, and we change the frequency, reducing the cost of ownership for our customer. When it comes to the brand Royal Enfield logo on the quality OK sticker, the customer feels that yes, it is assured. We have a very good amount of greenery in the plant, and we are looking for a lot of green cover, and we are working on many projects which can reduce the carbon dioxide emission so that we have a sustainable environment. The laser welding, so which is environmental friendly, and the output is more, the productivity is very good, and it is automated, and the quality levels are superb. When I look back at 2004-2005, we were making about 80-100 motorcycles a day, and today we are in excess of 3,000 a day. So the scale has grown, but not only the scale, it's also to do about the type of quality levels which we are achieving every day. What our CEO says that it's a 120 years startup company. So that is because of the culture what is established in this company. The freedom for the people what to do it, and the urge to do new things. As a designer, I'm not here to just design some machines. We are given an opportunity to create, design the aspiration, right? We are designing the aspiration. So that's a great thing. So there is no limitation. We don't follow the others. We don't do things others what has done. We do things differently, and we make the people to follow us. That is the uniqueness in Royal Enfield. There are processes which have to be followed. There are application of robots which have to be done, and various other capacity and capability related infrastructure that are put in. But I think that can be replicated by any other OEM or any other manufacturer. What I think still drives us is the type of people and their passion towards work, to ensure all that gets translated to the motorcycle which we want the customer to enjoy. So I think that is the crux and differentiates us from the rest of the manufacturers. Can we just request everyone that's up in front to either lower your cameras so that everyone can get to see the presentation, please? Thank you so much. And coming up next on stage is Sidla. Good morning, everyone. A very, very, very good morning to you all. And thank you so much for being here for what's obviously a really, really important and emotional day for all of us. The launch of the new Bullet 350, which we're absolutely delighted and excited about. But before we get into that, as you could see from the
previous film on manufacturing and quality that a lot of what all of you have told us over the years, over the decades, some of you, Adil, that we have made quality an obsession at Royal Enfield. And what you're seeing here is just a little film about how obsessed we are, but we are truly, truly, deeply obsessed about quality, about manufacturing, about continuous improvement, Kaizen, about and as a microcosm, which came out in the film as well, about the health of our heart, our engine, the oil contamination. It's a journey that, for example, we worked on. Govind and I, actually it so happened it was Govind and me 25 years ago, in the late 90s, that we came across this issue and we said, we just got to solve it. And it's been 25 years that we've done everything. We've, improved and changed machines and cleaning systems and visual systems and inspection systems and deburring and everything. We've just been at it for 25 years, and as you heard, we've really emerged as #1 in the world. I mean, really, and it doesn't happen from accident. You don't get the cleanest engine in the world by accident. It happens because of the whole team here, the whole manufacturing team here, the sourcing team, the quality team, the PD team. That's how these things happen, and we've taken it to heart. We're absolutely obsessed by it, but we're also equally obsessed by this motorcycle, the lovely Bullet 350, and as I told you last night, this is what brought us to the party, right? This Bullet 350 is what brought us to the party. This is what made, modern day Royal Enfield possible, right? This is on the back of this motorcycle is what the whole Royal Enfield empire has been built on, but this motorcycle is unwavering. It doesn't change. It's sort of it's that steadiness. It's that, like we call it, our North Star. That's what keeps us real, keeps us honest, is this motorcycle, right? The rest of Royal Enfield can go a little bit further left, a little bit further right, a little bit more adventure, a little bit more touring, but this bike is what we want to retain as the core essence, and in a sense also what India wants, right? Because I know it's a product that we'll sell internationally and globally, but truly this is an icon of India. This is an icon that has been part of Indian culture, part of Indian tradition nearly for so long, and all the stories, all the ideas, all the concepts that and that all of us have heard over generations. We want to be true to all of that. We want to be true to the all-metal bike that people like, the silhouette that people love, and to retain what makes the Bullet a Bullet, right? That is really important, and Mark's going to tell you more about that, but that was the essence of it. What makes a Bullet, we got to keep that, and we got to breathe new life into the rest of the motorcycle, because it's going to hit its centenary in less than a decade. And this Vallam, which you've spent time going through Vallam, this is its home. This is where it's going to have its centenary. It's going to be rolled out here as well, the 100 years of Bullet, so in less than a decade. So this is the future that we wanted to give to the Bullet, and we're super proud of what we've been able to do with the Bullet, and you're all going to have a look at it more closely and ride it in a couple of days as well. But the Bullet essentially, in the end, is a sum total of all the stories about the Bullet. It's all that we hear, all that we feel, and what we've tried to do in our own way is to capture those
amazing real stories of real people who are actual owners and riders of Royal Enfield bikes. That's the film that we've created, and I love it. I hope you all love it as well. Anur, please. Thank you. सबसे अलग सबसे असली डिफरेंट कैलिबर हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर हम गेम रखते मुट्ठी में हाँ जादूगर आए बाजीगर मैं बाजीगर सबसे अलग सबसे असली डिफरेंट कैलिबर हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर हम गेम रखते मुट्ठी में हाँ जादूगर आए बाजीगर सबसे अलग सबसे असली डिफरेंट कैलिबर हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर हम गेम रखते मुट्ठी में हाँ जादूगर आए बाजीगर मैं बाजीगर सबसे अलग सबसे असली डिफरेंट कैलिबर हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर हम गेम रखते मुट्ठी में हाँ जादूगर आए बाजीगर And on your sides are actually the. Thank you so much. The score was done by Divine, and I hope you got the motorcycle beat behind it, which is sort of mixed into the whole Bazigar score. But really, these are all our riders. These are riders of Royal Enfield bikes. You can see now we've got the images on the sides as well. So we have a bit of still images as well, and these are real generational riders. I mean, these are 3 generations of Royal Enfield riders, and it's just absolutely spectacular. We go to different corners. Anur and team have been to across the country and just unearth stories, and there's just so many stories that we had to pick and choose the few that we were actually able to bring out in the right light. But there's just a lot of stories of the Bullet across India, and we want to pay tribute to that, and that's what this is about, the real stories of the Bullet across India. So yeah, that's our whole thinking, and Bullet Meri Jaan, of course, that's what it's all about. And by the way, we're exporting the idea of Bullet Meri Jaan, no translation, across the world now. So when we're taking Bullet across the world, it's going to be Bullet Meri Jaan everywhere. So with great pride from India, Bullet Meri Jaan. And with that, I call Mark Wells, Head of Product Strategy and Industrial Design, Chief Design Officer, sorry. And he's going to tell us the real stuff about this bike, what went in the thinking, how we made it what it is. Thank you very much, Mark. Thank you, Sid, for that introduction. So I mean, obviously, this is a name and a model that has endured for 90 years. This has been in our DNA for 90 years. And it was a bike that changed how motorcycles designed. When the Bullet introduced the articulating swinging arm, it was a seminal design, and almost every other motorcycle since has followed that direction. And when we were starting this project, one of my designers said, this is a totem. And I thought I'd look up the definition of that. I thought I'd look up what does totem mean. So a totem is an animal or object regarded as being symbolic or representative of a particular quality or concept that's held up as an emblem of the tribe. And I think that really sums up what it is for us. It's our tribal emblem. It's who we are. And there were a number of elements that we had to keep as part of the design language, as part of the design story. There were visual elements that were sacrosanct to the design direction. So clearly, number one is the proportion and the stance.
is that riding position, that straight back, proud, defined riding position. It was those visual cues that you immediately know a Bullet as soon as you see it. You can see it down the road and you know that bike is a Bullet straight away. So we're talking about, things like the tiger eyes, the headlight casket, the teardrop tank, the pinstripe, the bench seat, the thumb. All of those things are what Bullet stands for, and with this new model, all of those are retained. However, this is an all-new motorcycle, so there is virtually nothing that carries over, or absolutely nothing that carries over onto this 2023 model from the UCE model. And when you compare this bike to the outgoing UCE model, we have obviously the J1 engine. You've ridden the J1 engine in our other models already. You know how much of a step forward that is in terms of refinement, in terms of quality, in terms of noise, vibration, harshness. All of those things are a massive step change. We've got the all-new chassis. The chassis combined with suspension and riding position gives a really plush, really nice ride, really good handling. These are all, again, big step-ups from the previous bike. We've got a 300mm front disc and a 270mm rear disc. Again, it gives real confidence when riding, a real step forward in terms of quality, in terms of what the bike is. For me, this bike represents a leap forward in terms of refinement and in terms of quality. And so I think, when you look at what we've got here, we've focused on some of the details. So, if you look at this beautiful badge we've taken, which is kind of almost like the jewel in the Bullet's crown almost, and we've taken inspiration. We look really hard at all of the original models and we've taken inspiration from that. And we've got some beautiful colourways. I love the burgundy colour. I think the burgundies come out beautifully. Obviously, we had to have the standard, that is the iconic colourway. And then with this, the new gold black, we've got a slightly contemporary twist on it, this twin tone colourway. And all of it is about elevating the bike, about celebrating its specialness and where it exists. And I'm just really proud of it. I think it looks great. I think it's a great looking motorcycle. I love riding it. I can't wait to see what you guys and girls think about it, because I think it's a brilliant motorcycle to ride. And so I think I'm now going to pass over to Govin, who's going to tell you about pricing for this model. So over to Govin. Thank you, everyone. So that's the all-new Bullet 350, which we are taking into the next generation. This new Bullet 350 will be available in 5 different colorways. There are 3 variants, of which the entry variant will be available at a price point of 1.73 lakhs, which is the military red and the military black. That's the entry variant of the all-new Bullet. And the middle variant, which is the standard maroon and the standard black, that's available at 197,436 ex-showroom. And the gorgeous looking top variant, the black gold, will be available at 2.15 lakh. And the booking starts today in India, and the retail will start from 3rd September. In next country, which we are looking at, is Europe. We will be taking it in end of October, November type, and followed by all the other countries, because this new Bullet with the well-refined J-series engine is the Euro 5 compliant, which can be taken to any part of the globe, and that's where we are very proud of taking us to the next generation. Now I'll request Siddharth to come up for a photograph, and Mark.
Thank you. Thank you so much. We will have walkarounds of the assembly line also organized for you as 2023 bullets begin being rolled off the assembly line. So if any of you would like to sign up for that, please do connect with some of my team members here. And also just to let you know, lunch is served here on my left-hand side. So thank you all for being here. It's been a great morning and a great afternoon and a great ride here on. Anur, why don't you run the thematic once more? The term or the terminology which is used in the rest of the world is DFM, which is design. सबसे अलग सबसे असली डिफरेंट कैलिबर हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर हम गेम रखते मिट्टी में हाँ जादूगर आए बाजीगर मैं बाजीगर सबसे अलग सबसे असली डिफरेंट कैलिबर हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर हम गेम रखते मिट्टी में हाँ जादूगर आए बाजीगर सबसे अलग सबसे असली डिफरेंट कैलिबर हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर हम गेम रखते मिट्टी में हाँ जादूगर आए बाजीगर मैं बाजीगर सबसे अलग सबसे असली डिफरेंट कैलिबर हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू हम गेम रखते मिट्टी में हाँ जादूगर आए बाजीगर Gentlemen, the assembly line walk around is going to start in the next 5 minutes. I would request everyone who were part of the planter in the morning to patch themselves up with their own respective PR spots. Thank you. सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से ये नई बुलेट 350 देखने को मिल रही है। यहाँ पे वही गोल्डन स्ट्राइप्स पिन स्ट्राइप्स आप देख सकते हैं इसके टैंक पर, एंड बुलेट 350 की यहाँ पैजिंग, ट्विन ड्यूअल शॉक्स रियर में इसके आप देख सकते हैं, एंड ये सेटअप है बटन्स वाला। ऑलरेडी हम ये बटन्स वाला सेटअप है ऑलरेडी हम रॉयल एनफील्ड की बाइक्स में देख चुके हैं। सो वही कुछ पैटर्न इस तरह का है, इसमें भी कंटिन्यू करा गया है नई बुलेट में। एंड यहाँ पे छोटा सा नेगेटिव डिस्प्ले दिया गया है जिसमें इंफॉर्मेशन, फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर, इको, यहाँ पे आपको ट्रिप मीटर देखने को मिल रहा है, ओडोमीटर वगैरह। यहाँ पे ऊपर जो स्पीडोमीटर है वो इसका एनालॉग दिया गया है। रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 की स्टैम्प बैजिंग आप यहाँ पे इसके हेडलाइट के ऊपर भी देख सकते हैं। एंड ऑल्सो राइट साइड में जो बटन्स हैं वो भी कुछ मीटियोर या रॉयल एनफील्ड की और बाइक्स में हमने देखे हैं वैसे ही कुछ बटन्स यहाँ भी यूज़ कर गए हैं। डिस्क ब्रेक फ्रंट में है, इसमें यहाँ देखने को मिल रहा है। अभी फ़िलहाल स्पेसिफिकेशंस की कुछ एग्जैक्ट अभी डिटेल्स हमें बताई नहीं की हैं, थोड़ी देर में वो बता दी जाएंगी। तो जैसे ही वो डिटेल्स आती हैं वो उसके बारे में आपको बताएंगे। यहाँ नीचे रॉयल एनफील्ड की बैजिंग इसके इंजन पर भी दी गई है। जो एसेंस है बुलेट का वो रॉयल एनफील्ड कह रही है बरकरार रखने की पूरी भरपूर कोशिश करी गई है इस नई बुलेट के अंदर भी। आपको कैसी लगी है फ़िलहाल?
यहाँ पे नई बुलेट लुक वगैरह थोड़े बहुत जो चेंजेस हैं, एंड ऑल्सो यस दिस बुलेट इज़ E20 कंप्लाइंट नॉर्म्स हैं, तो उसके हिसाब से नई बुलेट भी अब इस तरह देखने को मिल रही है। बाइबर के डिस्क ब्रेक यहाँ पे इसमें देखने को मिल रहे हैं। कलर वाइज एक ये ऑप्शन यहाँ देखने को मिल रहा है एंड एक ये ऑप्शन है, एंड ऑल्सो एक ये थोड़े क्लासिक फील वाली जो कलर कॉम्बिनेशन है यहाँ पर कुछ इस तरह दिए गए हैं। एंड ये लैम्प्स जो बुलेट में आते थे उस तरह के वैसी फील फ्रंट में यहाँ पे देखने को मिल रही है। कलर ऑप्शंस और भी हैं, हालांकि कुछ वहाँ असेंबली लाइन पे कलर ऑप्शंस खड़े हैं अभी, लेकिन यहाँ पे स्टेज पर 3 ही कलर का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप ही को अगर मुझे उनके बारे में अभी फ़िलहाल डिटेल्स आई नहीं है, हालांकि स्पेसिफिकेशंस को लेकर। प्राइस हालांकि यहाँ अनाउंस हो गया है। प्राइस जो इसका रखा गया है मैं आपको एक बार बता देता हूँ प्राइस क्या रखा गया है इसका। इस बुलेट 350 का आई थिंक आपने लाइव में थोड़ा पहले देख ही लिया होगा। बर्र कह रहे हैं, बेकार लग रही है। और किसी का कोई सुझाव, कोई ओपिनियन नई बुलेट को लेके, तो 2,15,800 रुपये इसका टॉप वेरिएंट है। जो ब्लैक गोल्ड ऑप्शन इसमें आया है उसका टॉप वेरिएंट का प्राइस 2 लाख कट रहा है। 197 1,97,436 रुपये इसका मिड वेरिएंट है, जो कि स्टैंडर्ड ब्लैक और स्टैंडर्ड मरून में, जो मरून कलर वहाँ पे खड़ा है तीसरा, तो उसमें आपको ये प्राइसिंग देखने को मिलेगा 1,97,000। और जो स्टार्टिंग वेरिएंट है उसका प्राइस है 1,73,000 और वो नॉर्मल कलर कॉम्बिनेशन यानी कि ब्लैक और रेड में अवेलेबल है। उस पर वाइट ग्राफिक्स का इस्तेमाल करा गया, बट यहाँ पे कुछ इस तरह से प्राइसिंग देखने को मिल रही है। नई बुलेट की 173 से स्टार्ट हो रहा है और जाता है इसका प्राइस 2,15,000 तक। चेक आई थिंक अब ऑडियो बेटर आएगा। यस, थोड़ा ऑडियो बेटर आएगा। सो नियॉप कह रहे हैं करोल बाग से मॉडिफाई करवा दिए सर रॉयल एनफील्ड को पता चलेगा तो उन्हें बहुत निराशा होगी। आप कह रहे हैं करोल बाग से मॉडिफाई कराई है। शिवा कह रहे हैं गुड बाइक, किक क्या इलेक्ट्रिक स्टार्ट है, तो किक स्टार्ट का ज़माना जा चुका है। इलेक्ट्रिक वाला मामला ही यहाँ पे मुझे लगता है इसमें देखने को मिलने वाला है। ये कैसा हो रहा है, मुझे ना किक देखने को मिल रही है ना इलेक्ट्रिक स्टार्ट देखने को मिल रहा है। सेल्फ स्टार्ट ही होगा होपफुली। हाँ, ये सेल्फ स्टार्ट दिया गया है तो किक नहीं है, सेल्फ स्टार्ट ही दिया गया है। सो श्रीधर पूछ रहे हैं कैन यू स्टार्ट द बाइक। यस आई कैन स्टार्ट द बाइक। आई होप इट्स नॉट इन गियर, न्यूट्रल में हो। मैं एक बार न्यूट्रल चेक कर रहा हूँ बस। अगर बाइक देखो मैं ट्राई कर रहा हूँ, न्यूट्रल में लग नहीं रही है क्योंकि बाइक अभी मूव नहीं कर सकता, तो थोड़ा मूव आगे पीछे करना पड़ेगा। मैं दूसरी बाइक देखता हूँ अगर वो स्टार्ट कर सकता हूँ कि नहीं मैं। हाँ, तो एक बाइक यहाँ स्टार्ट हो गई है। क्रांति यहाँ पे खड़े हैं। क्रांति आप ही बता दें इसका एग्जॉस्ट कैसा साउंड कर रहा है, थोड़ा रैप करके हम सुना देते हैं व्यूअर्स को। वाली फील है रॉयल एनफील्ड ने ऑलमोस्ट वही आपको फील आएगा जो बुलेट की फील होती थी। जिस तरह का थंब, जिस तरह का बेस, जिस तरह का नोट, एग्जॉस्ट नोट सुनाई देता था, वैसा ही एग्जॉस्ट नोट यहाँ पे भी आपको इसमें देखने को मिलने वाला है। निखिल कह रहे हैं आई एम दी ओल्ड मॉडल स्टैंडर्ड वाली बुलेट ही सही लगती है। बताइए आप। अब एक क्या पूछ रहे हैं 500 आएगी, 700 का कुछ अनाउंसमेंट नहीं है, सिर्फ 350 यहाँ पे सभी जगह 350 बाइक्स खड़ी हैं। 500 का कुछ डिटेल अभी तो बाइक आई है, इतनी जल्दी बात इसे खारिज कीजिए। तो रॉयल एनफील्ड कह रही है कि इस बाइक को बनाने में जिस तरह का
टाइम या जिस तरह की लेगेसी उन्होंने पुरानी बुलेट की इसमें रखने की कोशिश करी है, तो आई डोंट थिंक कि बाइक बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट या बहुत ज़्यादा अलग फ़िलहाल अभी लग रही है। अगर पुरानी बुलेट की कुछ इमेजेस आपके दिमाग में है तो उससे काफ़ी हद तक मिलता जुलता ही मामला यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट कुछ नयापन आया है टेक्नोलॉजी को लेकर, इंजन को लेकर, बट इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन वाइज काफ़ी हद तक पुराना बुलेट वाला फील है। वंश 500 सीसी का ऑप्शन नहीं है अभी फ़िलहाल, कोई अनाउंसमेंट नहीं है। बुलेट 65 का भी कोई अनाउंसमेंट नहीं है शिवदत्त जी। गुरजोत जी कह रहे हैं गई काम से बुलेट फिर। सर अभी जो वेरिएंट वाइज जो डिफरेंस अभी फ़िलहाल मैं भाप पाया हूँ वो कलर के हिसाब से है, ठीक है। कलर के हिसाब से कॉम्बिनेशन का जो है वो ऑप्शन वाइज प्राइस में थोड़ा फ़र्क आ रहा है। फीचर वाइज क्या क्या डिफरेंस है अभी फ़िलहाल वो स्पेक शीट का हम वेट कर रहे हैं। रॉयल एनफील्ड हमें भेजेगी वो स्पेक शीट, तो स्पेक शीट का हम वेट कर रहे हैं। जैसी आएगी एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन वाइज डिफरेंस क्या है तो वो भी डिटेल में आपको टाइम्स ड्राइव पर पता ज़रूर चल जाएंगे। टाइम्स ड्राइव यूट्यूब या वेबसाइट के ज़रिए आपको वो डिटेल ज़रूर मिलने वाली है। गुरजोत कह रहे हैं मार्केट डाउन जाएगी। सर आप पीछे ही पड़ गए बुलेट के। निमिष पूछ रहे हैं यूएसबी है। निमिष लेट मी चेक यूएसबी है कि नहीं है। आई डोंट थिंक सो। हाँ है पड़ा, ये देख रहे हैं ये यूएसबी पॉइंट यहाँ पे दिया गया नीचे में है पड़ा। शायद विजुअली मैं दिखाने में सब। हाँ ये देखिए ये यूएसबी पॉइंट यहाँ पे इसका दिया गया, तो यूएसबी है। वो फ़ोन चार्ज करने के लिए मामला यहाँ पे सॉकेट दिया गया है, जो कि आज के टाइम में हर राइडर की ज़रूरत बन गई है। रियर टायर साइज़ का है सर, रियर टायर साइज़ है 120 सेक्शन आप देखेंगे एंड 18 इंच का टायर रियर टायर दिया गया है। C8 के टायर्स इसमें यूज़ करे गए हैं। इंद्रजीत कह रहे हैं सीट में मज़ा नहीं आ रहा। सर देख के शायद आपको मज़ा ना आ रहा हो और बैठ के अभी फ़िलहाल हम देख नहीं पाएंगे, और बहुत ही जल्द इसका टेस्ट ड्राइव रिव्यू भी हम करने वाले हैं। तो कंफर्टेबल कितनी है अभी फ़िलहाल ब्रॉडनेस के हिसाब से मैं कहूँ ब्रॉडनेस मुझे ठीक लग रही है सीट की, बट कितना कंफर्ट ड्राइव रिव्यू भी टाइम्स ड्राइव के हैंडल्स पर देखने को मिल जाएगा। वंश कह रहे हैं भैया सीट के लगा दीजिए। हाँ वंश जिस तरह सीट दी गई है, बट लेकिन इसमें एक्सेसरीज़ का भी ऑप्शन है। वहाँ पे इसका एक्सेसरी वाला वर्जन खड़ा है, तो सीट को चेंज कराने का या कुछ अलग डिफरेंट ऑप्शन लेने का भी ऑप्शन दिया गया। एक्सेसरीज़ भी हैं इसकी, सो मे बी आपको ये पसंद आए, दूसरा आपको पसंद आए, या दूसरे पे आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो। सर अलॉय व्हील मॉडल नहीं है इसका गुरजोत जी, अलॉय व्हील्स वाला नहीं है, सब स्पोक। यहाँ पे देखिए अब सब मॉडल जो खड़े हैं यहाँ पे सब स्पोक व्हील्स है। वहाँ पे एक्सेसरी वाला खड़ा है, मैं आपको उधर की तरफ ले जाता हूँ, तो एक्सेसरी में अलॉय है या नहीं थोड़ा वहाँ पे अंदाज़ा होएगा। ये देखिए यहाँ पे इसका ये एक्सेसरी वाला वर्जन खड़ा है। यहाँ पे कुछ एक्सेसरी है इसकी, सीट के भी देखिए ऑप्शन है, कुछ इस तरह के सीट के ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, लेग गार्ड वगैरह के ऑप्शन हैं, विंड स्क्रीन वगैरह, इंडिकेटर्स एलईडी आएंगे इसमें एक्सेसरी के तौर पर अगर आपको लेने हैं तो। अदरवाइज जो स्टैंडर्ड हैं वो हेलोजन है। यहाँ पे देखिए इसका डायनोमीटर पे टेस्ट करा जा रहा है, स्पीड टेस्ट करी जा रही है वहाँ पे। तो हम ये रॉयल एनफील्ड के प्लांट पर ही है जहाँ पे पूरा हिसाब किताब चल रहा है, सब कुछ बहुत कुछ साथ साथ यहाँ पे हो रहा है। यहाँ टेस्टिंग शुरू हो गई है, बाइक की बुकिंग्स आज स्टार्ट हो गई हैं। ये देखिए आप इस तरह से हिसाब किताब यहाँ पे चल रहा है, सभी लोग लगे हुए हैं। थोड़ा आपको मैं प्लांट भी दिखा देता हूँ। असेंबली लाइन है इस नई बुलेट 350 की, वो मैं आपको असेंबली लाइन भी दिखाता हूँ। तो देखिए असेंबली लाइन है, इसका उद्घाटन आज ही करा गया है, पूरे पर्दे में ढकी हुई थी आज, यानी कवर्स थे बाइक्स के ऊपर,
तो असेंबली लाइन है नई बुलेट 350 की। ज़्यादातर अब बाइक तैयार करी जाएंगी, बुकिंग स्टार्ट हो गई है, शोरूम्स में बाइक आना शुरू होंगी। एंड देखिए तो किस तरह से यहाँ पे काम चल रहा है इसके टैंक पे। ट्रेन किस तरह काम होते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे सीट गायब हो गई है इसकी, पीछे वाला मड गार्ड गायब हो गया है। जिस तरह से यहाँ पे ये देखने को मिलती है बाइक। इन केस अगर आप लोगों को क्यूरियोसिटी है कि बाइक का प्रोडक्शन किस तरह से होता है, किस तरह से असेंबली लाइन चलती है, क्या क्या पार्ट्स जो हमें पूरी बाइक असेंबल होने के बाद दिखते नहीं हैं, जो दिखते हैं देखिए यहाँ पे इसका रियर मडगार्ड असेंबल कर रहे हैं, फिट कर रहे हैं। पंकज जी कह रहे हैं व्हाट अबाउट न्यू इलेक्ट्रा। सर इलेक्ट्रा की कोई खबर नहीं है अभी फिलहाल जो आज की खबर है, आज की बड़ी खबर है वो है रॉयल एनफील्ड की बुलेट 350। चलते हैं और पीछे बाइक के पार्ट पुर्जे और कम होते हुए देखते हैं और आपको एक नया एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा किस तरह से असेंबलिंग चलती है कंपनी में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टायर फिट कर रहे हैं इसका, यहाँ पे टायर नहीं है, देखिए टायर आ रहा है, फिट करेंगे उसको। नवीन जी, मैं ये ABS वाला जो आप पूछे हैं डुअल चैनल ABS वाला, ये अभी आप पहुँचे तो जस्ट टेक्स्ट आ जाएगी। सिंगल चैनल आई थिंक होगा, बट डुअल चैनल का ऑप्शन है या नहीं है, क्या एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन हैं, विल हैव टू वेट फॉर दैट फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 10-15 मिनट्स और हाफ एन आवर। देखिए यहाँ से चल रही है असेंबली लाइन कुछ इस तरह से। सभी रॉयल एनफील्ड वर्कर्स, यंग वर्कर्स, जिन लोगों को नई बुलेट लेनी है उनके लिए नई बुलेट असेंबल करी जा रही है इस असेंबली लाइन में। तो फिलहाल कुछ इस तरह से रॉयल एनफील्ड का ये प्लांट यहाँ देखने को मिलता है, जहाँ पर इसकी नई बुलेट की असेंबली लाइन चल रही है। काफ़ी कुछ यहाँ पे इंटरेस्टिंग होता है प्लांट में। इनकेस आप में से कोई आया हो तो उसको ज़्यादा अच्छे से पता हो कि किस तरह से प्लांट्स में काम होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह की टेस्टिंग होती है, किस तरह की रिसर्च होती है, किस तरह की डिज़ाइनिंग होती है। हाँ, तो ये देखिए कलर ऑप्शन एग्जैक्टली मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे फ्यूल टैंक्स इसके रखे हैं, फ्यूल टैंक्स कलर ऑप्शन देखिए, मिलिट्री रेड है, मिलिट्री ब्लैक है, स्टैंडर्ड मरून है, स्टैंडर्ड ब्लैक, ब्लैक गोल्ड। तो ये कलर ऑप्शन यहाँ पे इस नई बुलेट 350 के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। 1 2 3 4 5 कलर ऑप्शन यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं। अलग से टैंक बुलेट 350 का। तो ये कुछ यहाँ पे रॉयल एनफील्ड के प्लांट पर बुलेट की असेंबली लाइन में हमें देखने को मिल रहा है, और बुलेट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन अभी तक हमारे तक पहुँची है वो हमने आपको बताई। अब इस वीडियो को करते हैं ख़त्म, क्योंकि कुछ और कंटेंट हमें आप लोगों के लिए शूट करना है एंड एक प्रॉपर डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन वाला वीडियो वॉक अराउंड जल्द आपको टाइम्स ड्राइव के यूट्यूब पर देखने को मिलेगा। तो स्टे ट्यून्ड टाइम्स ड्राइव। थैंक यू वॉचिंग, बाय बाय।